begin my performance. I would like to talk a bit about why I chose this title. So, in my performance, I would like to talk a bit about why I chose this title. So, over performance, I would like to talk a bit about why I chose this title. So, over So we all know that there is a brutal incident happened recently in Kolkata RG Kar. A doctor, female doctor, was killed, murdered, and raped. And this is almost more than 20 days. We have not got any justice. Supreme Court has not given any capital punishment or declared anything. So now we are carrying on this protest because we want that the victims' family get proper justice. And we cannot demand for criminal punishment. I think they will be getting the proper punishment, and whoever has done, or if single person, it's more than one, everyone should be punished. And we are here not only for the protest of that movement, there is one more agenda. This is not a very isolated event, if you all know. It is basically the rape is happening anywhere, everywhere across this country, across the globe. So our voice is not only to protect ourselves. We want the society to at least think before doing any such crime. Before I begin my performance, I would like to talk a bit about why I chose this title. So, over Ishita, right? हम लोग एक स्पेसिफिक एजेंडा लेकर एक महीने से खड़े हैं। 9 अगस्त कोलकाता में जो ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है, तो आप लोग सब जानते हैं कि कोलकाता का सिचुएशन, वेस्ट बंगाल का सिचुएशन अभी क्या है। एक मास मूवमेंट हो रहा है जो हम लोग का इंडिपेंडेंस के बाद कभी भी ये नेशन ने नहीं देखा। विदाउट एनी पॉलिटिकल बैनर पीपल्स आर कमिंग, सब लोग आ रहे हैं, एक मास मूवमेंट हो रहा है। हम लोग का एक ही बात है, हम लोग को जस्टिस चाहिए, और जस्टिस के पैरेलली हम लोग गवर्नमेंट से एक साधारण नागरिक के हिसाब से जो अपील करना चाहते हैं। तो जैसा इंसिडेंट, जैसा ब्रूटल मर्डर हुआ है, जैसा रेप एंड ब्रूटल मर्डर अर्जीगढ़ पे हुआ है, वैसा ये सारी देश में कभी भी होना नहीं चाहिए।